Hello everyone, welcome to the next that is practical module how to register our work for the copyright in India. This is again very important from resume point of view because it gives the value for your resume. So basically how to start, that is how to go for protect our any innovative or any creative work for a copyright. For this section, their requirement is we required one PowerPoint presentation. So that prepare one PowerPoint presentation on any topic regarding your syllabus, out of syllabus. But during the making of this PowerPoint presentation, remember one thing: in that PowerPoint presentation, there should not be a college name, college logo. ये नहीं होना चाहिए उसमें कॉलेज का नाम नहीं होना चाहिए कॉलेज का लोगो नहीं होना चाहिए यस आपका नाम चलेगा उस पीपीटी पर फर्स्ट पेज पर और सेकंड वाला जो स्लाइड रहेगा उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट लिखो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट आपने जो पीपीटी बनाई है वो पीपीटी किसके लिए है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पीपीटी बना रहा हूँ कॉपीराइट कैसे फाइल करने का है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ पीपीटी के थ्रू पीपीटी एग्जांपल करके सो दैट मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्या रहेगा व्हाट इज माय एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट इज this presentation is deals with the how to protect our creative work through a copyright registration. Copyright registration is very important. In this PowerPoint presentation, I will teach you the step by step the procedure how we can protect our work for a through the copyright. So this is my short abstract. So second slide should be your PowerPoint about the abstract of your presentation. Another one is uh, during this after the uh, after the completion of your work convert your PowerPoint presentation into a PDF ध्यान में रखना है आपको कन्वर्ट करना है आपका PowerPoint presentation PDF में कन्वर्ट करना है because during the filing of a copyright application our work should be in the form of a PDF. Our work should be in the form of what? PDF. So what is the procedure step by step? First one, go to the website, Google search and type the copyright. After typing the copyright, there is a first option copyright.gov.in. This is the site. So click here the copyright.gov.in. After clicking the copyright.gov.in, this is the first page, first official website that is copyright.gov. This is the first page. In this the first page, there is a first column that is e-filing of copyright applications. E-filing of what? Copyright applications. So So, so click on the registration of copyright form number 15. Form number 15. Remember this thing. 15 और जो भी होगा number. ठीक है? So this is the very important. This should. अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, after the clicking here, it may ask you the user ID and password or a captcha, but you are the first time doing this work, so that you should need to go for this. That is click here for a new registration, new user registration. So the click here, new user registration. In this case, the new user registration, just fill up all the detail that is Mr. name, surname, address, all these things. And this is the one security question. Remember this thing, there is one security question. Who is your favorite hero? Write down anything, write Salman Khan, Shah Rukh Khan, whatever it is. That is your security. Now, choose your user type. Remember this thing, this is only for a general user. This is only for what? General user. Now, create user ID and password and confirm password. And after that, mention your captcha. That is A4L4DL. And here, I hereby declare that, and then click on the submit. Once you submit it, maybe one verification mail is received on your email ID or not. Once you are created, there is a one message that successfully you created this. Your login ID password is should be this. Remember this login ID and password, which is a very important. Okay. Now we will go for a second slide.
Now, after the create your account in the copyright.gov.in, that is Copyright Office Government of India, go to the home page and click again the registration of a copyright. Click here. After clicking here, it may ask you the login ID and password. The field is there. Just write down the captcha, that is 06RFM, and submit. QP. Now, once you are logged in the copyright.gov.in, now after login, you will see the such type of page. Remember one thing, already I submitted the so many work for a copyright, so many works are pending, so many works are abandoned, so that this page will be appear. You are the first time, so that you don't worry about this. Uh, Here should be a blank page is there. Now, after filing a copyright, now see after login, just click on the e-filing of applications. When you are going first time filing of your work, e-filing of applications, then remember this address. This address is very important because we have to submit our work into two copies with this in the form of what? PDF. List of the document to be attached in the PDF. Please ensure that Acrobat PDF is installed. जस्ट उसके ऊपर वाला एड्रेस हमेशा याद रखें, वहां पर आपको भेजना है। और याद रखना है, रिमेंबर वन थिंग, आपको हर बार सेव के बटन क्लिक करना है। एंड नाउ फिल अप द पेमेंट डिटेल्स, आपको पेमेंट भी करना है। रिमेंबर इफ यू हैविंग द ATM card, you can go to it. Now click on the click here for the online copyright registration. When I click here, now see here is the first form. Remember this thing. Now कोई भी वीडियो skip मत करना. Remember ये step by step procedure है. This is your practical. You have to submit your copyright certificate. This is a very important. Now see, first one is write down here your name, your address, pin code, there. Then the date of dispatch. Remember this thing, date of dispatch means what? When you are going to dispatch your work. So that remember one thing, either choose, right now the today is the 1st March. So I select the 2 months. Okay. Now save the party details. Click here. Now date of discharge cannot be greater than today's date. So that write down first month. Save details. Now see, details will say. Now communication on this subject, if suppose there is a one mail from this, so who the copyright office किसके साथ कांटेक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस राइट डाउन हियर योर अगेन योर आइडेंटिटी, योर नेम, phone number, pin code as it is. Now select I accept. When you select I accept, there is another one tab, save. Click on the save button. Now save. Automatically you are going to the step number 2. Remember one thing, you are going to now step number 2. Now this is the step number 2. Step number 2, category of applicant, obviously individual, country India, state should be the Maharashtra. I'll select the another one. Then the district suppose like this. Now applicant detail. Remember one thing, this is your name, again your name. Applicant detail is your name, Sarangote, like that. Now save the new applicant. Click on the save new applicant. This will be your address. Now choose the applicant signature and upload the signature. This is very important. So I will select my signature from here. Click on here, the signature. It will be the less than 512 KB. Now click here, upload your signature. Now signature is uploaded successfully. Now nature of the applicant interested in the copyright of the work. Select one.
author or owner. Remember one thing, you are doing the PPT, during the PPT submission, select either author or owner. I will select the author. Now, class of the work. Class of the work is literacy. Remember this thing. Your class of the work is what? Literacy. Now, description of the work. Write down the abstract here. The second slide. Just I told you before that there should be a one slide regarding your abstract. What is that abstract? So that I am applying for the IPR. So I will write down the IPR fundamental course, fundamental course for UG, PG students. Like that, just write down. And then the title of the work. Title of the work should be write down. Suppose my work is IPR fundamental, my PPT title is IPR fundamental, so I write down the IPR fundamental. Okay. The language, in which language is PPT is there? Obvious, English. So select on the English. Now next, name and address, nationality of the author, and if the author is deceased, then the date of his decease. So write down the same of as applicant. Now, year of the country first publication. This work is never published in anywhere before the copyright. So that automatically click on the unpublished. Check this unpublished. If you select the published, then second tab will be open. This one. So that it should be an unpublished work. It should be an unpublished work. Then this is also disabled. This is also disabled. Now, name and address of the nationality owner. Point number 11. Select same as applicant. Okay, same as check your name is there. 12 number, name and address of the nationality of other person. So again, same as author, author or owner. Here should be your name. If the work is artistic work, this is not applicable because our work is literacy work, so that is disabled. This one is also disabled. If the work is, this is also disabled. If the work is 16 is also disabled. Remark. Write down here, Shri Shivaji Science Innovation and Incubation Center. Remember your remark is Sri Shivaji Science Innovation and Incubation Center and save. Now, after saving successfully, we are going to the third page, which is very, very easy. First number, this is an original work. Yes, just click on this yes, and remaining all the details are sublime. If the work is translation, there is no need, name of address, there is no need of this. All things are again disabled, so that just we have to click here an original work. And again, save. After saving, the step number 4 is regarding the payment. Regarding what? The payment. Now see, how much payment? That is a 500. Now click here, the guideline for using all these things. Click here, pay. Once you click on the pay, see, this is your request number, this is your amount, 500 amount. Read all these things. There is no need to read, just agree and make a payment. So many times due to the server load, this site is very, very slow. But this is also important to understand how to go for this. Read all these details. Your name should be correct, address is correct. Then the continue. Click on the confirm page. Now confirm. After confirming page, see the first success rate. This bank name is does not meaning that you have to HDFC Bank card. No, no. This is the third party. So that जिसका भी rate सबसे ज्यादा होता है, success rate is very very high. Click on that. Success rate is very very high. Now, how we can go? We can go for a debit card. Which type of debit card do you have? Either Rupee or Visa. So then click on the Rupee and just now here this one. Just write down here the captcha RFDZC8 and just write down. Just scroll down. Acknowledge and just click on the pay button. Once you click on the pay button,
there is a payment gateway. There is a payment gateway like this. Now this card number, edit card number, expiry date, CVV number, all these things, and click on the Pay Now button. Once you click, once you click on the Pay Now button, now remember one thing: either payment is successful or payment is not successful. Both the cases, in the both the cases. अगर suppose आपका payment अगर now once पेमेंट इज सक्सेसफुल, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहां पर आपको एक रिसिप्ट जनरेट होती हुई मिलेगी और आपको कंप्लीट फॉर्म जो है वो इस पैटर्न में दिखेगा। राइट डाउन सी, यहाँ पर आपको मिलेगी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यहाँ पर देखो आपका नाम होगा, टाइटल होगा और आपका ये पेमेंट होगा। वेन ये कब मिलेगा आपको? जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तब। तो यहाँ पर क्या बोला है? 2 कॉपीज ऑफ योर वर्क। आपका जो काम है, आपका जो पीडीएफ है, उसकी 2 प्रिंट आउट निकालना है अलॉन्ग विद दिस स्लिप। एक स्लिप आपके पास रखना है, एक स्लिप आपको ऑफिस भेजना। देखो एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये स्लिप जो है अपने पास रखना है और एक स्लिप जनरेट होती है लाइक दैट, वो आपको ऑफिस यूज जो लिखा है वो ऑफिस यूज करना है। ठीक है, अभी आपने जो कुछ भी डिटेल्स भरी है ना, उसका भी एक स्टेटमेंट जनरेट होता है लाइक दिस। फॉर्म नंबर XIV, दैट इज 15 नंबर का फॉर्म नंबर है, ये भी जनरेट होगा। तो ये जब फॉर्म जनरेट होगा तो यहाँ पर देखो आपके पूरे डिटेल्स रहेंगे, जो तक अभी तक जो आपने भरा है वो यहाँ पर आपकी सिग्नेचर भी होगी। ये पूरे डिटेल्स आपको होंगे। इसकी भी आपको 2 प्रिंट आउट निकाल के रखनी है। हर एक पेज पर आपको सिग्नेचर करनी है, ध्यान में रखना, हर एक पेज पर आपको सिग्नेचर करनी है। 2 प्रिंट आउट निकालना है। 2 प्रिंट आउट, एक प्रिंट आउट जो है वो पोस्ट ऑफिस से आपको उस जो एड्रेस दिया है ये वाला, इस एड्रेस में भेजना है। फॉर्म, PPT की PDF कन्वर्टेड 2 कॉपीज प्रिंट आउट और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये सब कुछ आपको भेजना है। और ध्यान में रखना, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जब भी जनरेट होगी, यहाँ पर एक डायरी नंबर जनरेट होता है, ये डायरी नंबर याद रखना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सबमिशन करोगे तो वहां पर ये स्लिप आपको लगानी भी है, ध्यान में रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरा सवाल ये है कि अगर सपोज मेरा पेमेंट अगर फेल हो गया, इफ सपोज पेमेंट अनसक्सेसफुल है, तब देखो यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ पर देखो मेक अ पेमेंट, मेक अ रीपेमेंट, इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक डायरी नंबर दिखेगा या फिर आपका वर्क नंबर दिखेगा जो पेंडिंग है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर अगेन वही पेमेंट का ही आपको ऑप्शन करना है, सो दैट पेमेंट करना है। अगर सपोज एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो रुक जाना, एक दिन के लिए रुक जाना, फिर से इसको अटेंड करना। ओके, नाउ पेंडिंग पेमेंट में भी दिखेगा आपको सब कुछ ओके है, तो यहाँ पर भी से आप क्लिक कर सकते हो पेमेंट कहाँ पर पेंडिंग है। अगर सपोज आपका पेमेंट हो चुका है बट आपकी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है या फिर कोई इशू है, तो यहाँ पर देखो पेमेंट हिस्ट्री करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो पेमेंट हिस्ट्री। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन भूलना मत इसको, यहाँ पर देखो एक अपलोड वर्क करके है, अपलोड वर्क एंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अभी देखो मेरा कुछ भी वर्क नहीं, बट जब आपका एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो वहां पर एक ऑप्शन आता है अपलोड योर वर्क। तो जो भी आपकी पीडीएफ है ना, तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक टेबल आता है जहाँ पर लिखा रहता है अपलोड योर वर्क, अपलोड कर लेना। अपलोड करते ही आपका काम हो गया। आपको एनवलप बनाना है, एनवलप में वही सब डॉक्यूमेंट्स लगाने और उसको दिल्ली भेज देना। रिमेंबर दिस थिंग, पेमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट अनसक्सेसफुल होगा तो मेक अ रीपेमेंट ऑप्शन चेक करना, पेंडिंग पेमेंट ऑप्शन चेक करना, पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन चेक करना। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फॉर्म नंबर जो आपने सबमिट किया वो भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस समय आप यहाँ पर क्लिक करना पेंडिंग एप्लीकेशन, इस टैब के ऊपर क्लिक करना पेंडिंग एप्लीकेशंस में। तो पेंडिंग एप्लीकेशंस में आपको एक इस टाइप का टेबल दिखेगा जहां पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर एक स्टेटस में आपको दिखेगा व्यू डॉक्यूमेंट्स करके, आपको क्या दिखेगा? व्यू डॉक्यूमेंट्स करके, वहां पर क्लिक करना है। नाउ 1-2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद क्या करना है? आपको स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पर जस्ट राइट डाउन द क्लिक करना है आपको स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डायरी नंबर एंटर करना है और यहाँ पर व्यू स्टेटस दिखना है। वेरियस टाइप ऑफ वर्क दिखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग दिखेंगे, यानी कोड लैंग्वेजेस होंगे, जैसे वर्क अवेटेड होगा, वेटिंग होगा, ये। रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है खुद को, फिर ई फाइलिंग पर क्लिक करना है। ई फाइलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पढ़ना है, फिर फिलअप करना है,
फिर ऑल द डिटेल्स जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर आपको पेंडिंग करना है। राइट राइट नाउ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर पीपीटी कैसे बनाते हैं। तो देखो मेरी ये जो पीपीटी है काफी सिंपल पीपीटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर। इसमें ना ही मैंने कुछ इमेज यूज किया है। ये मेरी सेकंड स्लाइड एब्स्ट्रैक्ट की, यही मुझे कॉपी पेस्ट करके उसमें डालना है। तो दिस इज वेरी सिंपल। लाइक दैट आपकी पीपीटी होनी चाहिए, ध्यान में रखना, लाइक दैट आपकी पीपीटी होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दी हाउ टू फाइल कॉपीराइट। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सपोज आपके पास कॉपीराइट है, एक बार अगर हो गया कॉपीराइट, तो फिर आपको पता चलेगा कि कॉपीराइट किस टाइप से होते हैं। बाहर सब एजेंसीज है जो आपसे 15-20 हजार में कॉपीराइट करवाते हैं, बट ये आपको सिर्फ 500 रुपए में ही हो रहा है, वो भी आपका प्रेजेंटेशन वाला बस। सो दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिकल में भी है इसलिए आपको करना भी है। तो